Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing Dynamics Part 4. अभी तक हमने ये सारे के सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और हर सब टॉपिक के साथ मैंने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो भी मेंशन की हुई है। तो अगर आपसे कोई सब टॉपिक नहीं हो रहा या आपसे कोई सब टॉपिक मिस हो गया यू कैन वॉच दीज कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियोस। टुडे वी विल बी डूइंग सर्कुलर मोशन। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्कुलर मोशन। Whenever an object is moving in a circular path, that object is in circular motion. That object is subjected to circular motion. अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, we have an object, let's say a ball, and this ball is moving around a circular path. ये हमारे पास एक circular path है। ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, What do we need to know about circular motion? आपको सिर्फ दो तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज वेलोसिटी, सेकंड इज एक्सेलरेशन एंड थर्ड इज रिजल्टेंट फोर्स। पहले हम इन तीनों की डायरेक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगी टू द कर्व्ड पाथ और टू द सर्कुलर पाथ। जैसे आप ये देख सकते हैं, हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है एंड tangent टू दैट इज आवर वेलोसिटी। ठीक है ना? सो इट विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल। यहां भी और यहां भी और यहां भी इट विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वेयर विल द रिजल्टेंट फोर्स बी। द रिजल्टेंट फोर्स will always be towards the center. It will always be towards the center. और आपको तो पता ही है, जहां रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है वहां ही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ही होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑन टू द पॉइंट्स। पॉइंट नंबर वन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर वन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें यह भी पता है कि अ वेक्टर क्वांटिटी हैज अ डायरेक्शन, देयरफॉर वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन। पॉइंट थ्री, when an object is moving in a circular path, it is constantly changing directions. जैसे आप यहां देख सकते हैं, in one instance जो बॉल है, it is in this position and in this position बॉल की डायरेक्शन है या कह लो वेलोसिटी की डायरेक्शन है in this direction। ठीक है, in this instance इस बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है in this direction। in this instance इस बॉल की वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली दैट द बॉल इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट फोर, a change in direction means a change in velocity. Point 5, change in velocity is known as the acceleration. ये मैंने आपको काइनेमैटिक्स में बताया था that acceleration can be caused by two things. One is a change in velocity. The second is what? A change in डायरेक्शन। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक वेलोसिटी है, लेट्स से दिस बॉल, इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 2 meters per second इन दिस डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है, दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट
that object is accelerating. अगर ये नीचे को जाती है, ऊपर को जाती है, किसी भी तरफ जाती है, and it is changing directions, it means कि it is accelerating at that split second. अब आप मुझे बताएं, हमने पॉइंट 3 में क्या डिस्कस किया था? हमने पॉइंट 3 में ये डिस्कस किया था, when an object is moving in a circular path, it is constantly changing directions. जो आप खुद भी देख सकते हैं, आप अगर कोई भी पॉइंट ले लें और उस पॉइंट पे इस बॉल को रख दें, the direction of the velocity will be different at that point. And what is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. तो किसी भी तरीके का चेंज आएगा in the velocity, that will be known as the acceleration. ठीक है ना? या that will be considered as acceleration. मैं एक और दफा रिपीट कर देता हूं. Acceleration is the rate of change of velocity. और अगर किसी भी तरीके का चेंज आएगा in the velocity, either it be change in velocity or a change in direction of the velocity, that will be considered as acceleration. ठीक है? आगे चलते हैं. Point 6. And for acceleration, a net force is required. जैसे मैंने आपको बताया था, in the formula, F is equals to ma. For an acceleration, we need a force because force is equals to mass into acceleration. And अगर हमारे पास कोई net force है ही नहीं, there cannot be an acceleration. ये मैंने आपको बहुत दफा बताया हुआ है. Point 7. Acceleration is in the same direction as the resultant force. ये भी हमें पता है, हमने काफी दफा पढ़ा हुआ है. अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगा. ठीक है ना? सो या दैट इज द होल थिंग फॉर सर्कुलर मोशन. ठीक है ना? अब मैं आपको ये एक और दफा इसकी समरी एक्सप्लेन कर देता हूं. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमें पता है. वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शंस. वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन. जैसे आप देख सकते हैं, इन दिस मोमेंट डायरेक्शन डिफरेंट है, इस मोमेंट में भी डायरेक्शन डिफरेंट है, इस मोमेंट में भी डायरेक्शन डिफरेंट है. पॉइंट 4. अ चेंज इन डायरेक्शन मीन्स अ चेंज इन वेलोसिटी. हमने पता किया था दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड जब एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होती है या चेंज होती है, दैट कंसिडर्स एज अ चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है ना? एंड व्हाट इज नोन एज अ चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन. Therefore, the body is accelerating in that circular path since it is constantly changing directions. Point 6. And for acceleration, a net force is required. हमने ये पता किया था using this formula. ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया that for acceleration there is a net force required. Point 7. Acceleration is in the same direction as resultant force. ये तो हमें पता है. That's why यहां भी हमने जो एरो है वो सेम रखा है for resultant force and acceleration since they are in the same direction. ठीक है? अब हम आ जाते हैं on to some past papers. एक और डेफिनेशन है ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स is the force acting on an object when that object is in a circular motion and that force is towards the center, which we're calling the resultant force for now. ठीक है? अब हम आ जाते हैं on to the past paper questions. This is question number 4 from my past papers. The diagram represents the moon in its orbit around the earth. तो ये हमारे पास अर्थ है. This is the moon. Which arrow represents the direction of the resultant force acting on the moon at the instant shown? ये मैंने आपको भी बताया था that whenever an object is moving in a circular path, the resultant force and the acceleration will always be towards the center of the curved path.
हमारे पास कर्व पाथ कौन सा है? दिस इज द कर्व पाथ एंड व्हाट इज द सेंटर? व्हाट एट एनी पॉइंट अगर हमारे पास मून यहाँ होता, व्हाट वुड बी द सेंटर ऑफ द कर्व पाथ? इट वुड बी दिस, ठीक है ना? तो हमारे पास resultant force will be acting towards the center, and in this scenario resultant force will be A, because this is the only option which is pointing towards the center. Paper 1 October November 2019. The Earth travels at constant speed in a circular orbit around the Sun. Again similar question. अर्थ ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, अगर हम इसको एक्सटेंड करें इट वुड लुक नॉट समथिंग लाइक दैट, they like something like this, ठीक है ना, but more circular, like a perfect circle, ठीक है? Which arrows show the direction of the acceleration of the earth and the direction of the velocity of the earth? अब ये हमसे velocity का भी पूछ रहे हैं और acceleration का भी पूछ रहे हैं. मैंने आपको बताया था velocity will always be tangential to the curved path. हमारे पास curved path कौन सा है? अगर मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, अ सर्कुलर पाथ बनाऊं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना? ये हमारा सर्कुलर पाथ है विच इज अराउंड द सन. ये मैंने बस एक्सटेंड कर दिया फ्रॉम द लिटिल बिट ऑफ पाथ दैट आई गॉट. अब आप मुझे बताएं, मैंने आपको क्या बताया था अबाउट द वेलोसिटी? मैंने आपको ये बताया था वेलोसिटी विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द कर्व पाथ. सो समथिंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है. अगर अर्थ इधर होता तो वेलोसिटी कैन बी इन दिस डायरेक्शन एज वेल और दिस डायरेक्शन, whatever it might be, but it has to be tangential to the curved path. So yeah, ये कौन सी ऑप्शन है? लेट मी सी. ओके, ये हमारे पास है द एरो फॉर द वेलोसिटी. अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. Direction of acceleration will always be towards the center of the curved path, and the direction of the velocity will always be tangential to the curved path. आगे चलते हैं. ये मेरे ख्याल से जो अपने लेटर्स हैं दे आर अ बिट मिसओरिएंटेड. तो मतलब इन ऑप्टिमल सिचुएशन ये पी शायद इधर होता, आर यहाँ होता एंड क्यू इधर होता. फॉर दैट, if that's the case, P and R would be the right answer. R for velocity, P for acceleration था या क्या था? Yeah, acceleration, direction of acceleration. Question number 41, paper 1 May June 2018. The diagram shows a satellite S traveling at a constant speed in a circular orbit around a planet P. तो ये हमारे पास एक planet है and the satellite is orbiting in a circular path to that planet. Which statement is correct? A. The resultant force on the satellite is zero. No. There is a centripetal force or a resultant force which is always towards the center. B. The resultant force on the satellite is in the direction B. No. C. The resultant force on the satellite is in the direction C. No. That would be most likely the velocity. D. The resultant force on the satellite is in the direction D. Yeah, that is correct. And that is where the acceleration is also. Question number 48, paper 1 May June 2017. A satellite is orbiting the Earth in a circular orbit. Again, ये अगर हमारे पास Earth है, a satellite is orbiting the Earth in a circular orbit, much like this. बस इसकी जगह Earth है, ठीक है? Which two quantities are always in the same direction as each other?
A. The acceleration of the satellite and the displacement of the satellite. B. The acceleration of the satellite and the velocity of the satellite. C. The resultant force on the satellite and the acceleration on the satellite. D. The resultant force on the satellite and the velocity on the satellite. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था दैट ये तो आपको लाइक अगर आपको सर्कुलर मोशन ना भी पता होता, अगर आपने ये चैप्टर ना भी पढ़ा होता, आपको तब भी ये पता होना चाहिए था दैट वेयर एवर द रिजल्टेंट फोर्स इज, उसी डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन भी होगी. लाइक दैट इज वेरी ऑब्वियस. ठीक है. सो सी इज द राइट आंसर आई बिलीव. एंड या दैट इज इट for this video. Thank you for watching. Have a great day. Take care. Allah Hafiz.